और आज की बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के आरोपों को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत ने सीधा चैलेंज दे दिया है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर ठोस सबूत है तो उसे कनाडा भारत को दे, अपने तक सीमित ना रखे, और अगर कोई ठोस सबूत आते हैं तो उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। यूएन जनरल असेंबली में कनाडा को आतंकियों का पनाह देने के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाने के बाद एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि अगर कनाडा को कोई सबूत दिखाने या उनके पास कोई सबूत है और कोई वो उसकी वैल्यू है तो वो भारत को बताएं, हम उसको देखने के लिए तैयार हैं। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा को ऐसे आतंकियों के बारे में जानकारी दी है जो वहां की जमीन से आतंक की साजिश रचने और भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कनाडा के पास कोई ठोस सबूत और सूचनाएं हैं तो हमें दिखाएं। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से कनाडा में हमारे दूतावासों पर हमला किया गया, हमारे राजदूतों को धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन कनाडा की सरकार उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहती रही। अगर कोई कुछ ठोस सबूत देता है तो मैं उस पर गौर करने के लिए तैयार हूं। तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे कनाडा को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, सब्सटैंशियल एविडेंस है, तो भारत के साथ साझा करें, लेकिन साथ ही भारत ने जो आपको सबूत दिए हैं खालिस्तानियों के खिलाफ, उस पर भी कार्रवाई करें। एस जयशंकर की खुली चुनौती, दम है तो सबूत दिखाओ। But it gives me something specific. It doesn't have to be restricted to Canada. But if there's any incident which, is an issue, and somebody gives me something specific as a government, I would look at it. Of course I would. यूएन असेंबली में कनाडा को खरी खरी। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. कनाडा पर निशाना, ट्रूडो को डायरेक्ट मैसेज। Respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. दुनिया को बताया, दादागिरी नहीं चलेगी। That rule makers do not subjugate rule takers. भारत ने जस्टिन ट्रूडो को खोला चैलेंज दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने रखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि कनाडा में आतंकी पलते हैं और ट्रूडो के पास सबूत होते तो वो छिपा कर नहीं रखते। We told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. I mean, look, if somebody gives me something specific, it doesn't have to be restricted to Canada.
But if there's any incident which is an issue, and somebody gives me something specific as a government, I would look at it. Of course, I would. इससे पहले जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एस जयशंकर दहाड़े तो पूरी दुनिया सुनती रह गई। जयशंकर ने नाम लिए बिना कनाडा की पोल खोली, उसके सहयोगियों को नसीहत दी और बता दिया कि भारत आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंक को पनाह देने वालों को भी जवाब देना होगा। Our vision of one earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers, nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. न्यूयॉर्क में एस जयशंकर की खरी खोटी सुनाने का असर फौरन कनाडा में हुआ। जस्टिन ट्रूडो तिलमिला गए, फौरन मैसेज न्यूयॉर्क पहुंचाया गया। इसी यूएन असेंबली में कनाडा के राजदूत ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए भारत पर पलटवार किया। As we put great emphasis on the importance of equality, we also have to uphold the values of free and democratic societies. We cannot bend the rules of state-to-state relations for political expediency, because we've seen and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign interference. But the truth is, if we don't adhere to the rules that we've agreed to, the very fabric of our open and of our free societies may start to tear. We also have to protect and promote the principles of equality. जस्टिन ट्रूडो की तिलमिलाहट दुनिया देख रही है। उसकी झलक भारत विरोधी बयानों में भी दिख चुकी है। ट्रूडो अपने ही घर में इस कदर घिर गए हैं कि उनके स्टाइल पर कनाडा की खुफिया एजेंसी भी सवाल खड़े कर रही है। There starts to get more complicated, and that's a question that nobody is talking about at this point in time, and the Prime Minister hasn't mentioned either. And that question is, to what extent have groups in Canada become too active in supporting an independent Khalistan? Remember, it is the Sikh terrorists who brought down Air India and led a couple of other attacks in Canada. So there is a history in this country of Sikh extremism verging into terrorism. To what extent there was a drive behind the inaction, which doesn't make the inaction excusable, but was it because there is a question there whether it was this action was taken. ट्रूडो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। भारत पर लगाए गए आरोपों पर उन्हें अपने ही घर में आक्रोश झेलना पड़ रहा है, तो संसद में नाजी सैनिकों के सम्मान को लेकर भी फजीहत हो रही है। यहाँ तक कि ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट के स्पीकर को ही बलि का बकरा बना दिया। ट्रूडो ने इसका आरोप स्पीकर पर मढ़ दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।